students, Assalamu alaikum. How are you all? Hoping everybody is safe and sound and enjoying. Well, beta, actually, let us start our today's lecture, and that is all from text. And you know that we are reading lesson number 4 these days, and the lesson has got completed. And today we will do its exercise, which includes क्वेश्चन आंसर्स एंड सिनोनिम्स. तो आज हम लोग जो काम करेंगे, आपका लेसन नंबर 4 जो है बुक 2 से वो कंप्लीट हो चुका है. आज उसकी एक्सरसाइज में देखते हैं बेटा सिनोनिम्स और क्वेश्चन आंसर्स. और लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज वर्क. जी बेटा, सिनोनिम्स में आप देखिए, आपके लिए ये सिनोनिम्स इस हवाले से भी थोड़े आसान हो चुके होंगे कि आपने लेसन पढ़ा, उसमें जितने भी सेंटेंसेस में डिफ़िकल्ट वर्ड्स मौजूद थे वो सब के सब आपने यकीनी तौर पे उसके मीनिंग लिख लिए होंगे और उसको थोड़ा सा लर्न भी किया होगा, थोड़ा सा याद भी किया होगा, ताकि आपकी एक तो वोकैबुलरी जो है वो बेहतर से बेहतर होती चले जाए. फिर ये क्वेश्चन भी आपका, इस क्वेश्चन को भी आप कवर कर सकें. सिनोनिम रिलेटेड क्वेश्चन जो है जो आपका ऑब्जेक्टिव पार्ट में दिया जाता है. तो देखते हैं बेटे, इसके सिनोनिम्स को गो थ्रू करते हैं. योर वेरी फर्स्ट सेंटेंस इज that phrase expresses my attitude to the arrival of the weekend. That phrase expresses my attitude towards the arrival of the weekend. The underlined word is arrival, and you are having four options against this word, and options are passage, approach, period, excess. तो अराइवल का मतलब ये होता है अप्रोच, किसी चीज़ का आना, किसी चीज़ की तवक्को होना, आमद की तवक्को होना. तो पैसेज कैन नॉट बी द आंसर ऑफ अराइवल. पीरियड अगेन कैन नॉट बी द आंसर. एक्सेस का मतलब किसी चीज़ की ज़्यादती हो जाना, एक्सेस हो जाना, तो इट अगेन कैन नॉट बी द आंसर. तो अराइवल मीन अप्रोच, अप्रोच मीन अराइवल, आना, किसी चीज़ की एडवेंट, आना. तो हियर द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन, दैट इज ऑप्शन बी. And the word is approach. A-P-P-R-O-A-C-H. Fine. Number 2. Your second statement is the daily grind of school pressed heavily upon me. The daily grind of school pressed heavily upon me. The underlined word is grind. G-R-I-N-D. Grind mean क्या होता है? Hard work, hard labor. बहुत ही सख्त मुशक्क़त. समझ आ रही है हमें सेंटेंस में कि जो डेली ग्राइंड था, जो डेली हार्ड वर्क था, इट हैवली प्रेशराइज मी. ये मुझे बड़ा प्रेशराइज करता था. इट हैवली प्रेस्ड अपॉन मी, मुझे बहुत तंग करता था. तो ग्राइंड के हम मीनिंग पढ़ लेते हैं. इसके सिनोनिम्स: ए प्रेसिंग टाइम, नंबर 2 हार्ड वर्क, नंबर सी ड्यूटी, नंबर डी गोइंग. तो ग्राइंड बेसिकली इज हार्ड एफर्ट एंड हार्ड वर्क. सो योर आंसर इज हार्ड work. It's option B. Number 3 is the daily grind of school with its abundant homework pressed heavily upon me. Here the word is, the underlined word is abundant. Abundant mean क्या होता है? Plentiful, too much, excessive, बहुत ज़्यादा काम होना. तो यहाँ पर ऑप्शंस है डिफ़िकल्ट. डिफ़िकल्ट कैन नॉट बी द मीनिंग ऑफ एबंडेंट. अगेन चैलेंजिंग, इट कैन नॉट बी द मीनिंग. द थर्ड वन इज रेगुलर एंड द फोर्थ ऑप्शन इज एक्सेसिव. सो योर करेक्ट आंसर इज एक्सेसिव. ऑप्शन नंबर डी. ऑप्शन नंबर डी. नंबर 4 statement. There was no possibility for turning over for an extra dose. There was no possibility for turning over an extra dose. D-O-Z-E. Dose mean नींद को कहा जाएगा, ऊँघ को कहा जाएगा. तो हमारे पास ऑप्शन है स्लीप, मेडिसिन, टाइम, मनी. तो डोज मीन स्लीप. तो योर ऑप्शन इज ए. ए ऑप्शन इज द करेक्ट वन. इट मीन्स स्लीप. फिफ्थ पे देखते हैं. फिफ्थ स्टेटमेंट आपकी क्या कहती है? देयर वाज नो पॉसिबिलिटी ऑफ टर्निंग ओवर एन एक्स्ट्रा स्लीप. देयर वाज नो ऑप्शन, देयर वाज नो पॉसिबिलिटी ऑफ टर्निंग ओवर एन एक्स्ट्रा स्लीप. The word is, the underlined word is turning over. Turning over is having 4 options like asking, attending, requesting, availing of. और turn over mean यहाँ to avail of, फ़ायदा उठाना. तो our correct answer is option D, availing of. Availing of.
Number 6. Number 6 is, it was a dismal experience seeing the hours of school stretching ahead. The word is dismal. Dismal क्या होता है? Dismal कहते हैं bleak, gloomy, mournful, बहुत ही गमज़दा कर देने वाला. And options are bleak, demanding, daring, dependable. Daring क्या होता है? Daring mean bold, brave, valiant, बहादुर. तो डिसमिल यहाँ पर ब्रेव नहीं हो सकता. डिसमिल मीन ब्लीक, गमज़दा करने वाला. एंड योर ऑप्शन इज ए. आंसर इज ब्लीक. करेक्ट ऑप्शन इज ए. नंबर 7. वी हैड अ मेड वंस. मेड क्या होती है? फीमेल सर्वेंट होती है. ऑप्शंस आर मेल सर्वेंट, कुक, फीमेल सर्वेंट एंड गार्डनर. तो करेक्ट आंसर इज फीमेल servant. Female servant. Number 8 is, the maid would climb with grim steps to the attic. And the word is grim. Grim क्या होता है? Very horrible, threatening, बहुत ही खौफनाक, खौफ पैदा करने वाले. तो आपके पास है threatening, grim. The very immediate meaning is threatening. And options are threatening, measured, gleeful. ग्लेफुल क्या होता है? फुल ऑफ हैप्पीनेस. तो जो मेड सर्वेंट है उसके कदम वो सोर्स ऑफ हैप्पीनेस नहीं थे. हाउंटिंग. हाउंटिंग होगा जहाँ पर भूतों का बसेरा हो, वो जगह हाउंटिंग, डराने वाला. तो बेटा ग्रिम, द वेरी नेक्स्ट इमीडिएट मीनिंग ऑफ ग्रिम मीन थ्रेटनिंग. तो योर आंसर इज थ्रेटनिंग. एंड योर आंसर इज थ्रेटनिंग. नंबर 9. The maid would climb with grim steps to the attic. Attic मैंने आपको बताया था. Attic mean upper floor. तो options are paved, upper floor, unpaved and polished. तो automatically your option is number 9 पे upper floor. Upper floor. जी बेटे 9 तक हम लोगों ने कर लिया. And number 10 is, she would announce in deep funeral tone. Funeral क्या होगा? Gloomy, mournful, गमज़दा करने वाली. And options are funny, loud, suppressed. Suppressed क्या होगी? Suppressed कहते हैं दबी हुई, घुटी हुई, धीमी सी आवाज़. ठीक है. Controlled you can say. Mournful mean गमज़दा करने वाली. तो funeral it means gloomy. तो funeral means mournful. आपके नंबर 10 पे आंसर क्या होगा? मॉर्नफुल. और मॉर्नफुल मैंने आपको बताया ग्लूमी, डिप्रेस्ड, डिप्रेसिंग, ग्लूमी. नंबर 11. नंबर 11, आई यूज टू लाई वेटिंग फॉर दैट ओमिनस ट्रेड. ओमिनस क्या होता है? ओमिनस मीन गिविंग अ बैड ओमेन, यानी बदशगुनी का बायस होना, खौफनाक कोई चीज़ होना, डराने धमकाने वाली चीज़. आपके पास ऑप्शंस हैं थ्रेटनिंग, रिकग्नाइज्ड, fearful, expected. The very immediate meaning of ominous is again threatening. ठीक है जी बेटा. नेक्स्ट स्टेटमेंट इज, आई यूज टू लाई वेटिंग फॉर दैट ominous tread. I used to lie waiting for that ominous tread. Tread mean, tread क्या होता है? TREAD. Tread mean step, a way to walk, चलने का एक अंदाज, कदम, इसको कदम कहा जाएगा. तो यहाँ पर क्या आएगा? ऑप्शंस क्या हैं? ऑप्शन ए टॉक, बी सीन, सी ट्रांसमिशन एंड डी स्टेप. तो द करेक्ट आंसर इज स्टेप. ट्रेड मीन स्टेप, STEP. Number 13 is, the voice it heralded sounded like a summons to damnation. Heralded. Heralded mean क्या होगा? Communicated, conveyed, पहुंचाना. Heralded mean communicated or conveyed. तो options are proposed, conveyed, tricked, cleared. Ticked mean TICKED. Ticked एक word इसमें है. Ticked mean marked, MARKED. But the right option of heralded is conveyed. So let us write it over here. Conveyed.
It means conveyed. Number 14 is the voice it heralded sounded like a summons to damnation. Now the word again is summons. Summons means to call, bulana, bulava, orders. Summons also means orders, call. तो हमारे पास ऑप्शन है push, call, invitation, greeting. तो the correct answer to summons is to call, call, बुलाना, बुलावा. To damnation, damnation क्या होता है आपने पढ़ा था? It means hell. तो आपके पास नेक्स्ट सेंटेंस यही आ रहा है, यही सेम सेंटेंस रिपीट हो रहा है, वर्ड डिफरेंट हो गया. द वॉइस इट heralded साउंडेड लाइक अ समन्स टू डैमनेशन. डैमनेशन हेल को कहा जाता है, दोज़ख को कहा जाता है, जहन्नम को कहा जाता है. आपके पास ऑप्शन है हेल, हेवेंस, डेथ वैली एंड हाउंटिंग प्लेसेस. हाउंटिंग प्लेसेस कौन सी होती हैं? वियर फेंटम्स, घोस्ट्स एंड डिमॉन्स लिव, यानी भूत, जहाँ पर भूतों का बसेरा होता है. तो यहाँ डैमनेशन क्या है? हेल है. डैमनेशन का इमीडिएट मीनिंग क्या है? हेल, दोज़ख को कहा जाएगा. नंबर 16, द ऑपरेसिव. ऑपरेसिव क्या होता है? प्रेसिंग, टैक्सिंग, टायरिंग, थका देने वाला, तकलीफ देने वाला, इज्जत पहुंचाने वाला. द ऑपरेसिव वेट ऑफ द नॉलेज ऑफ फुल डे स्कूल वर्क remained a characteristic sensation. The word is oppressive. ऑपरेसिव के साथ ऑप्शन है, ऑपरेसिव के साथ टोटल, ऑर्डिनरी, रूटीन एंड प्रेसिंग. तो ऑपरेसिव का मतलब प्रेसिंग. नंबर 16. Number 17. Number 17 is again the same sentence but with another difficult word. And the sentence is the oppressive weight of the knowledge of full day's work remained a characteristic sensation. Characteristic क्या होता है बेटा? स्पेशल, कोई ख़ास किस्म के, स्पेशल. तो हमारे पास ऑप्शन हैं कैरेक्टर बेस्ड, स्पेशल, क्लूलेस, ड्रामेटिक. तो आंसर इज स्पेशल. Number 18. Number 18 is the university had a new kind of academic word. The university had a new kind of academic word and the underlined word is academic. Academic means talimi, related to education, educational, and your options are competitive, ordinary, educational and ambitious. The answer is educational. Educational, right बेटे? चलो इसके नेक्स्ट पेज पे देखते हैं हमारे पास मज़ीद ऑप्शंस क्या आ रही हैं. Friday morning was positively rose colored and the underlined word is rose colored. Rose colored आपने पढ़ा था, आपने ये पढ़ा कि राइटर के लिए जो फ्राइडे नाइट थी, बल्कि फ्राइडे इटसेल्फ जो था इट वाज रोज़ कलर्ड, यानी it was definitely very pleasant. तो rose colored mean pleasant. आपके पास ऑप्शंस आती हैं rose colored के साथ pink, fragrant, dull और pleasant. तो आपका आंसर क्या होगा नंबर 19 पे? pleasant. नंबर 20. नंबर 20 पे आपके पास आता है जी the last period on Friday had a special happy flavor. The last period on Friday had a special happy flavor. Flavor mean क्या होता है? Taste. तो यहाँ ऑप्शंस देखते हैं. Number A taste, B appeal, C message, D significance. तो the right answer is taste. बेटे जब आप सिनोनिम्स करते हो तो अपने नोट, ये जो आपके यूनिक नोट्स हैं इनको ज़रूर सामने रखें ताकि हम साथ साथ जो है आप सही इसके जो ऑप्शंस हैं, सही जो आंसर्स हैं उनको टिक कर लें, ठीक है, ताकि आपकी याददाश्त में रह जाए कि इस वर्ड का मीनिंग एक दफ़े फिर रिवाइज हो जाएगा. चूँकि बुक में तो हमने पढ़ा, टेक्स्ट में तो हमने डिफ़िकल्ट वर्ड्स पढ़े, अब एक दफ़ा फिर ये वर्ड रिवाइज होगा और इसके सिनोनिम्स जो हैं, इसमें जो ऑप्शंस हैं उसमें से आप आराम से ट्रेस कर लोगे. इस मीनिंग को दोबारा से रिवाइज करने के बाद उसका जो आंसर है वो आसानी से ट्रेस आउट कर लोगे. जी बेटा. नंबर 21 इज़ we walked home with the tread of an escaped prisoner. escaped mean run away, भागा हुआ, भगोड़ा, भागा हुआ जिसे कहा जाता है. escaped को run away होता है, भागा हुआ. तो options are run away, scared, important, dangerous. तो your answer is run away. फरार शुदा, भागा हुआ. Number 22.
Sometimes there were unexpected respites, and the word underlined word is unexpected with options exceptional, happy, unforeseen, motivated. The very immediate meaning of unexpected mean unforeseen, meaning sudden, unforeseen. Unforeseen. Number 23. Sometimes there were unexpected respites. Now the sentence is same, but the word is different. Like your word is respites this moment. Respites mean क्या होता है? Respites कहा जाता है breaks, pauses, breaks, वक्फे. तो options are periods, reasons, breaks, respiration. Respiration क्या होता है? Respiration is a different word. Respiration mean द एक्शन ऑफ ब्रीथिंग, सांस लेने का जो एक्शन अमल है उसको रेस्पिरेशन. तो जनाब यहाँ पर रेस्पाइट्स मीन ब्रेक्स, छुट्टियाँ, वक्फे, ब्रेक्स, तातील. नंबर 24. सम अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस कॉज्ड अनएक्सपेक्टेड क्राइसिस. सम अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस कॉज्ड अनएक्सपेक्टेड क्राइसिस. अनफोर्सीन क्या होता है? अनफोर्सीन विच आर अनएक्सपेक्टेड, गैर मुतवक्को चीज़ों को कहा जाता है. तो ऑप्शंस आर अनइम्पोर्टेंट, अनफेवरेबल, इमिटेटिंग, कॉपिंग एंड अनएक्सपेक्टेड. तो इमीडिएट मीनिंग इज हियर अनएक्सपेक्टेड. वेल, सेंटेंस नंबर 25. Some unforeseen circumstances caused to be cancelled the preceding Saturday. Preceding mean earlier, गुज़श्ता, पिछला, earlier. तो यहाँ options हैं earlier, onward, star, studies. तो your answer is earlier, गुज़श्ता. Number 26. Sometimes there were a sudden dismissal of the school. Dismissal mean closing, closure, बंद हो जाना, स्कूल का बंद हो जाना. तो ऑप्शंस आर डेमोलिशंस, क्लोजर, कंस्ट्रक्शन, फंक्शन. कंस्ट्रक्शन और फंक्शन, डिसमिसल का मतलब नहीं हो सकता. क्लोजर यहाँ पर वेरी इमीडिएट मीनिंग ऑफ दिस वर्ड क्लोजर, बंद हो जाना. ठीक है जी बेटे, आपने कितने सिनोनिम्स जो हैं वो कर लिए? 25 तक आपने सिनोनिम्स जो हैं वो कर लिए हैं. लेट्स सी सम मोर सिनोनिम्स. दैट इज नंबर 27. नंबर 27 इज अ मंडे ऑफ मेड अ लग्जरियसली लॉन्ग वीकेंड. एंड योर वर्ड इज लग्जरियसली. लग्जरियसली मीन कन्वीनियंटली, कंफर्टेबली, सम्चुअसली, बड़े उम्दा अंदाज में, बड़े आरामदेह पुरसकून अंदाज में. एंड ऑप्शंस आर कन्वीनियंटली, easily, limitedly and clearly. So the correct answer to this word is conveniently. Conveniently. That is the correct answer to this word. Well, number 28. If there had been a continuous hard frost for some days, and your word is frost. Frost mean snowfall, बर्फबारी हो जाना. तो ऑप्शंस आर कंडीशन, फस मीन confusion, climb mean climate, and snowfall. Snowfall is the immediate meaning of frost. So your right answer is snowfall. The very next sentence, 29, number 29 is, they were the blessed breaks in routine. Blessed mean blissful, fortunate, lucky. तो blessed के साथ pleasant, it means pleasant. तो इसके साथ options है bad, standard, pleasant, dedicated. तो correct answer is pleasant. Number 30 is, later 3 weeks holidays were tragically reduced to a fortnight. Later 3 weeks holidays were tragically reduced to fortnight. And the word is tragically. Tragically, unluckily, sadly, unfortunately. The options are tactfully, unfortunately, tastefully, temporarily. Tactfully यहाँ पर एक word है. Tactfully का मतलब क्या है? To handle skillfully, बड़ी तदबीर अंदाज में हैंडल करना. तो tragically का सही आंसर क्या हुआ? Tragically, unfortunately, unluckily. Unfortunately, बदकिस्मती से, sadly और unluckily. Number 31.
Well beta, number 31, I could look forward to a period of permanent felicity. Felicity मैंने आपको बताया था happiness, डिलाइट को कहा जाएगा. तो ऑप्शंस आर हैप्पीनेस, सॉरो, अलाइनमेंट एंड पिक्यूलरिटी. तो अलाइनमेंट क्या होता है? अलाइनमेंट मीन मैनेज, इट मीन्स अरेंजमेंट in straight lines, arrangement of something in straight lines, whereas the word is felicity, and felicity के साथ options happiness, alignment, sorrow and peculiarity. तो answer is happiness. जी, next sentence number 32, and that is, I would savor my happiness with conscious relish. I could savor my happiness with conscious relish, and word is savor. Savor mean to enjoy. So options are protect, enhance, enjoy or leave. So your answer is enjoy. Savor mean to enjoy, to relish. Number 33, I would savor my happiness with conscious relish. Conscious mean क्या होता है? Intentional, known, शऊरी. तो आपके पास ऑप्शन है कंजेक्टिव. कंजेक्टिव क्या होता है? फॉलोइंग ईच अदर, सक्सीडिंग. तो ऑप्शंस आर कंजेक्टिव, नोन, कॉमन, कीन. तो योर आंसर इज नोन, KNOWN. Number 34, and sentence number 34 is, I would savor my happiness with conscious relish. This time conscious is not the underlined word, whereas the relish is the underlined word, and relish means with taste, with delight. Options are realism, relief, mood, taste. So your answer is taste. So we have done almost 34 sentences so far, and the remaining 6 or 7 sentences are yet to be done. So let's do that as well. देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंसेस क्या हैं, उन्हें भी इसी तरह से हम लोग उनमें सिनोनिम्स को ट्रेस आउट करते हैं, उनके मीनिंग हम लोग लेते हैं. जी, नंबर 35 इज, आई कुड हार्डली बिलीव दैट 3 strenuous terms had rolled away. The word is strenuous. Strenuous क्या होता है? Strenuous मैंने आपको बताया था, arduous, taxing, laborious, बड़े ही मुशक्क़त तलब, लेबोरियस और arduous कहा जाता है, ARDUOUS. तो ऑप्शंस आर arduous, tremendous, sad, significant. So your answer is arduous. Arduous mean taxing, tiring, stressful, laborious. ठीक है जी, दिक्कत मुशक्क़त तलब कहा जा सकता है. I could hardly believe, next statement है number 36, I could hardly believe that 3 strenuous terms had rolled away. Rolled away mean past, चले जाना, गुजर जाना. Options are set in, past, removed, combined. So the correct answer is past, गुजर जाना. Number 37. Number 37 is, the longed for mythical summer holidays were at hand, and the word is mythical. Mythical mean imaginary, unreal. The options are majestic, memorable, funny and imaginary. So your answer is imaginary. It is imaginary. Number 38. Number 38 is, the longed for mythical summer holidays were at hand. This time the option or the word is at hand. At hand mean quite near, बहुत नज़दीक होना. The options are offered, left, near, lost. Your answer is near. Near किसका meaning है यहाँ पर? At hand. Number 39. 39 is, summer holidays were unspoiled and lying intact. Your word is intact. Intact mean unused, complete, unused, unharmed. Options are ineffective, inaction, useless or unused. The answer here, the correct answer is unused. Statement number 40. It's here. I often hung on the outskirts of an ice cream barrel, and the word is outskirts. Outskirts मैंने आपको बताया, outer edge, suburbs, बैरूनी किनारा इलाका. तो options are border, outer edge, shop and site. So your correct answer is outer edge. It is outer edge. Number 41. Number 41 is, I often hung on the outskirts of an ice cream barrow. Barrow क्या है? Trolley. तो options are shop, parlor,
पार्लर क्या है? सिटिंग रूम. ट्रॉली, फैक्ट्री. तो योर आंसर इज ट्रॉली. TROLLEY. Your answer is trolley. The last sentence is, I wondered whether the ice cream man would miraculously inspired. Miraculously means supernaturally, in a strange and unexpected way. So the answer out of these four, let us read these four options first. Supernaturally, merely, momentarily, permanently. So your answer is supernaturally. Supernaturally, मोजज़ाना तौर पर, supernaturally. So we have done all these synonyms from the notes, and let us come to the question answers now from textbook. बेटा आपको ये बताया गया है कि क्वेश्चन आंसर्स जो हैं आपकी हर लेसन के एंड पे 6 और 7 क्वेश्चंस आर देयर. तो इसके अलावा कुछ और एडिशनल क्वेश्चन, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो इसी लेसन से रिलेटेड हैं जो आपको आ सकते हैं. नॉट नेसेसरली कि जो आपकी चैप्टर के एंड में 5 या 6 या 7 क्वेश्चन मौजूद हैं उसमें से क्वेश्चन जो है वो सिलेक्ट होगा बोर्ड के लिए या पेपर के लिए. उसमें क्या है कि बेटा यू आर हैविंग डिफरेंट ऑप्शंस, लाइक यू आर हैविंग मोर एडिशनल क्वेश्चंस, दीज मे बी आस्क्ड, right? So let us do these questions from textbook. Your very first question is like, what was Deshi's attitude towards the weekend as a schoolboy? Why did he long for it? So what was the attitude of David Deshi's towards the weekend as a schoolboy? तो हम देखते हैं कि David Deshi's actually he was not a dull boy, but he anxiously waited for the holidays to come so that he could enjoy these holidays. And actually sometimes he felt bored, or sometimes he got exhausted out of the tough competition and abundant work and the feelings of never being able to relax in school. So that is why he automatically yearned for holidays. Rather, what was the attitude of the writer towards the holidays? He anxiously waited for the holidays. ठीक है, वो बड़ी बेचैनी से विद प्लेजर इंतज़ार करता था कि हॉलीडेज़ जो हैं उसको मिल पाएँ. व्हाट वाज डेशिस जनरल व्यू ऑफ स्कूल लाइफ? तो व्हाट वर डेशिस, ये जो पहला क्वेश्चन है बोर्ड में आ चुका है, ये सेकंड क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा रहा है ये भी बोर्ड में आ चुका है कि व्हाट वाज डेशिस जनरल व्यू ऑफ स्कूल लाइफ. वी सी अगेन दैट he never ever felt unhappy in school. He was not one of the students who wanted to bunk classes, who wanted to avoid his school work, or who really was fed up of routine. But sometimes it happened so that out of that tough routine and strict discipline of the school and the competition over there and the whole day which was to be spent, all these things exhausted him. ये सब चीज़ें उसको बाज़ दफ़ा थका दिया करती थी. Otherwise he was a good student indeed and he enjoyed his क्लास वर्क को एंजॉय भी करता था, अच्छा स्टूडेंट था, लेकिन वहाँ के टफ माहौल से बाज़ दफ़ा उकता जाता था और छुट्टियों का ख्वाहिशमंद रहता था. नंबर 3 इज़ Deshi's liked holidays for their freedom. Freedom for what? यानी he liked holidays for freedom. Freedom for what? Actually the holidays basically brought him a sort of freedom. A freedom from the hard competition, a freedom from the strict discipline of the school, a freedom from the excessive homework, a freedom from the feeling of never being able to relax. So that is why it brought him a sort of message from the dull routine or from the boring routine or the work of the day. तो इस वजह से वो freedom महसूस करता था कि at least due to having some weekends, due to having some unexpected holidays, he is having a chance to get indulged in some sort of recreation. ठीक है बेटे. Next question है, How did Deshi spend his summer holidays? तो summer holidays कैसे वो spend करता था? आपने previous lecture में ये पढ़ा कि he used to spend his summer holidays with his family. अपनी family के साथ summer holidays spend करता था, and the family used to go out of the town. They used to go to some recreational places, to some hilly areas, or to some relatives might be living somewhere out of the city, like that. So he usually spent these holidays with family out of town. Next देखिएगा, wishes do not come true in life.
राइट्स डिशेस। डिशेस क्या कहता है? विशेस डू नॉट कम ट्रू इन लाइफ, कि हमारी ख्वाहिशात ज़िंदगी में पूरी नहीं होती। वॉट आर द थिंग्स ही लॉन्ग्ड फॉर बट कुड नॉट हैव? वॉट आर द थिंग्स ही लॉन्ग्ड फॉर विच कुड नॉट फुलफिल? कौन सी ऐसी ख्वाहिशात थी उसकी जो पूरी नहीं हुई? तो वी सी that Deshies is very true in this statement in telling us that wishes never sometimes wishes do not come true. Actually, we see after reading this lesson that the writer, he desired for a tricycle in his early childhood, but unfortunately, unluckily, his parents couldn't afford this bicycle, this tricycle for him. Later on, when he grew up, this very desire of tricycle converted into a desire of getting a bicycle. Here again he had to face disappointment, and eventually he was able to get a bicycle at the age of 21 out of the money or the cash prize he got from Edinburgh University. कि बचपन में ट्राईसाइकिल वो नहीं हासिल कर सका, उसके वालिदैन के पास अफोर्डेबिलिटी नहीं थी, फिर बड़ा हुआ तो बाईसाइकिल की ख्वाहिश हुई, ये भी अफोर्डेबिलिटी में नहीं रहा, और फिर क्या हुआ जनाब, बिल आखिर जो है इसकी ख्वाहिश कहीं बहुत दूर जाके किसी यूनिवर्सिटी कैश प्राइज़ की मदद से पूरी हुई। लेकिन बहरहाल उसने ये कहा कि ये सारी बचपन की छोटी छोटी ख्वाहिशात जो थी वो पीछे रह गई, और जो मैं फुलफ़िल नहीं कर पाया, और जो ख्वाहिशात मुझे हकीकत का रूप धारे हुए नहीं मिल पाई। ठीक है, तो दैट वाज द ड्रीम ऑफ ट्राईसाइकिल इन वेरी अर्ली चाइल्डहुड, एंड लेटर ऑन ही डिजायर्ड फॉर अ बाईसाइकिल विच हिज पेरेंट्स एटलीस्ट कुडंट अफोर्ड फॉर हिम। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटे, आपकी एक्सरसाइज का हिस्सा है कि व्हाट डिड डेशिस डू विद हिज पॉकेट मनी? अपने पॉकेट मनी के साथ वो क्या किया करता था? एक बहुत अहम बात यह है कि ये तकरीबन 6 के करीब क्वेश्चन है, और ये सारे क्वेश्चन जो हैं तकरीबन बोर्ड में आ चुके हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। आपके पूरे एक लेसन में से सिर्फ एक ही क्वेश्चन जो है वो सिलेक्ट किया जाएगा, तो बेटे आपको सारा लेसन अच्छी तरह से तैयार करना है, एक ही क्वेश्चन जो है वो इसमें से लिया जाएगा। तो जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है यू हैव टू आंसर दैट वेरी क्वेश्चन। अपने कोई जनरल व्यूज़ उसमें नहीं डालने कि चीज़ों को समराइज़ नहीं करना, टू द पॉइंट आंसर करना है उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को जो आपसे पूछा गया है। आपके पास क्वेश्चन है कि व्हाट डिड डेशिस डू विद हिज पॉकेट मनी? उसको पॉकेट मनी जो मिलती थी उसके साथ वो क्या किया करता था? हमने देखा कि ही यूज्ड टू गेट अ फ्यू पेन्स एज अ pocket money from his parents, and it happened like that not only David but his brother Lionel and sister Sylvia, all the three used to keep this money in a money box, and they didn't spend any penny for themselves. अपनी ज़ात के लिए वो कोई पैसा खर्च नहीं करते थे, ये सारे के सारे पैसा जो है इट वॉज केप्ट इन अ मनी बॉक्स, इट वॉज सेव्ड, इसको बचा लिया जाता था। तो ही वॉज इन द हैबिट ऑफ सेविंग मनी राइट फ्रॉम हिज चाइल्डहुड, तो बचपन से ही उसको मनी सेविंग की आदत जो है वो उसमें मौजूद थी। जी बेटे ये आपके क्वेश्चन हुए टेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसके बाद वी आर हैविंग सम क्वेश्चन, एडिशनल क्वेश्चंस एज वेल विच आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट, और ये सारे के सारे टेक्स्ट से रिलेटेड ही हैं, इनमें से क्वेश्चन कोई भी आपको बोर्ड में पूछा जा सकता है। तो क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7, what was Desh's dismal experience on the Monday morning? What was Desh's dismal experience on the Monday morning? हमने क्या देखा मंडे मॉर्निंग, उसका डिसमिल एक्सपीरियंस क्या था? टू गेट अप और टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड टू गेट रेडी टू गो टू स्कूल, दैट वाज द डिसमिल एक्सपीरियंस इंडीड। एंड व्हेन द मेड सर्वेंट called the brothers and the sister to get up and leave the bed and no more sleep. So all these things sometimes annoyed him, or rather he felt that it was a sort of bleak experience of his life to get up early in the morning and get ready for the school, and the school hours which spread before his eyes, all this again हॉरिफाइड हिम। तो ये चीज़ें उसके लिए डिसमल एक्सपीरियंस थी, सुबह सुबह उठना मंडे को, स्कूल जाना, एंड नो मोर हॉलीडेज, ठीक है, छुट्टी ख़त्म हो जाना। नंबर 8, वाई वॉज एंटिसिपेशन ऑलवेज वर्स देन रियलिटी? कि बार बार किसी चीज़ का ऐलान करते जाना, जो चीज़ आपको दरपेश होना ही है बार बार से उसकी एंटिसिपेशन बिफोर हैंड उसकी अनाउंसमेंट जो है इट इज़ वर्स देन रियलिटी, वो हकीकत को फेस करने से ज़्यादा तकलीफ दे है। क्यों?
देखो बेटा, it is very true that the anticipation of something is always worse than reality, because when the maid servant used to announce that they had to leave the bed, they had to get up early in the morning, that it was really worse than to face the actual than to face the reality of going to school. तो इसीलिए राइटर ने ये कहा है कि the anticipation of something sometimes really disturbs our mind, ठीक है, and we rather feel exhausted and we rather feel something boring, we rather take all these things boring in our life, which ultimately we have to face. कि जब स्कूल जाना ही है तो उसकी बार बार अनाउंसमेंट का मेड सर्वेंट के जरिए किया जाना जो है वो कह रहे कि बहुत तकलीफ है, रियलिटी को फेस करने से भी तकलीफ है कि बार बार वो उठा रही है हमें. तो इससे पता चलता है कि एंटिसिपेशन ऑफ समथिंग इज़ रियली वर्स देन द रियलिटी इटसेल्फ. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वाज द करेक्टरिस्टिक सेंसेशन ऑफ डैशेस चाइल्डहुड. उसकी जो करेक्टरिस्टिक सेंसेशन थी चाइल्डहुड के दौरान वो क्या थी, एंड व्हेन डिड इट डिसअपीयर. तो वी सी दैट द ऑप्रेसिव वेट ऑफ द नॉलेज ऑफ द फुल डेज वर्क, the timetable of the full day's work when stretched before his eyes, it was the करेक्टरिस्टिक सेंसेशन ऑफ हिज चाइल्डहुड. तो ये इसके चाइल्डहुड का सबसे बदतरीन तजर्बा. उसको लगता था कि पूरा दिन फैला हुआ है, पूरा औकात कार जो है स्कूल का पूरा दिन गुजारना है यहाँ पर, ठीक है. तो दैट वाज द करेक्टरिस्टिक ऑफ हिज सेंसेशन ऑफ हिज चाइल्डहुड. एंड व्हेन डिड इट डिसअपीयर, और कभी डिसअपीयर हुई फीलिंग, व्हेन ही got admission in the university. और यूनिवर्सिटी में क्या था, he was having a sort of liberty to take limited period and to come and go, and the liberty of coming and going at his own, कि वो अपनी मर्जी से आ जा सकता था. he could come and go at his own will. नेक्स्ट देखते हैं what was rose colored for the writer. We see that the Friday morning was rose colored for the writer because the Friday morning was having a message of 2 solid holidays, or the message of weekend for the writer. So it was rose colored, definitely rose colored for him. Number 11, question number 11, what was Desh's attitude towards Friday, Saturday and Sunday nights. We see that the Friday night was basically the best night of the week with the message of 2 solid holidays, कि 2 holidays का पैगाम लाती थी Friday night, तो उसके लिए best night of the week थी. We again see that the Saturday was a pleasant Saturday night was pleasant in its own way, like it was still having a message of one full holiday of Sunday. But the Sunday night was full of threat for the morning of the Monday when he had to go to school. ठीक है जनाब. Number 12, what were the different unexpected respites. Unexpected respites कौन कौन से थे उसकी जो छुट्टियाँ उसको आ जाती थी. Sometimes we see that the students or he got the opportunity to enjoy half day off to see football match, and sometimes the school closed due to some critical conditions in the country or some emergencies, or sometimes because of some festivals and celebrations there was the dismissal of school 1 or 2 hours earlier. 1-2 घंटे पहले छुट्टी हो जाना स्कूल में किसी वजह से, हंगामी सूरत हाल की वजह से, सेलिब्रेशन की वजह से, ये सब उसके लिए बड़ी अनएक्सपेक्टेड छुट्टियाँ और बड़ी दिलचस्प छुट्टियाँ थी. नंबर 13, what different holidays did Deshi's have during his academic year. कौन कौन सी और छुट्टियाँ थी उसको जो कि academic year में वो enjoy किया करता था. You see that he enjoyed the annual mid-term holiday, that means the Monday off. He enjoyed a long weekend including not only Saturday, Sunday but also Monday. So that was a long weekend indeed, annual mid-term holiday. Then if there was hard frost, they got the holidays to enjoy skating. And again the most important holidays were of Easter, Christmas and 2 months summer vacation period. ठीक है जी, ये छुट्टियाँ उसकी हुआ करती थी. Number 14, what was Deshi's summer school uniform. हमने पढ़ा कि summer uniform was grey cricket shirt, grey shorts and red Wetson blazer. Next question, when did Deshi's buy his first bicycle? So he bought his first bicycle at the age of 21 from the prize money he won from Edinburgh University से ये prize win किया था. Number 16,
What miracle did Deshi's wish to happen when he was at school? वो क्या चाहता था कि क्या miracle हो जाए जब वो स्कूल में था. यानी sometimes because he was having no money at all with him, so with empty pockets sometimes he stood in front of the shops in front of sweet shops and yearned for some sweets or candies. Similarly, he stood near the ice cream trolley and wished that miraculously the ice cream man could provide him with some lollies, some sliders or some cornets or ice creams. तो ये चीज़ें वो चाहता था बचपन में अनएक्सपेक्टेडली हो जाएं. नंबर 17, what is the significance of number 6 Millerfield Place in the essay? We see that the number 6 Millerfield Place is basically the residence or the address of writer's residence. Number 18, why was the writer fed up with the school? क्या है? The writer was fed up with the school because of the tough competition, because of the abundant homework and because of the feeling of never being relaxed during school time. Number 19, Friday thank God एक phrase था, तो does this phrase show the writer's attitude towards the holidays? Yes. The phrase certainly shows us the very feelings, the very attitude of the writer, his own sensation towards the coming of weekend or holidays, because the holidays brought a message of relief from the abundant homework or from the full day's stay from school. G. Last question is, what did Deshi's feel about summer vacation? Summer vacation के बारे में वो क्या feel करता था? Actually, summer vacation was the actual time, and the whole year moved around these 2 months, which were really very precious for the writer, because he knew that it was the time when he would be able to fulfill or to materialize all his dreams. वो ये समझता था कि वो अपने तमाम जो ख्वाब हैं, जो ख्वाहिशात हैं, जो ड्रीम्स हैं, जो विशेज़ हैं, उनको रियलिटी में ढाल सकेगा इन समर वेकेशन में. ही वुड बी एबल टू हैव द एन्जॉयमेंट्स इन हिज ओन वे, कि अपने ही तौर पर वो इनको इन्जॉय करेगा. तो दैट इज़ वाई दैट वॉज द समर टाइम और द समर हॉलीडेज़ वर द रियल पीरियड full of enjoyment for the writer, and he was in a position to fulfill all his desires and dreams during this precious time of 2 months. Right, Pete? So we completed our exercise of the 4th chapter and end of term, and we did synonyms today. Similarly, we did question answers. So it all got completed for the day, and that's the end of today's lecture. तो बेटे इस चीज़ों को, सारी चीज़ें जो आपने पढ़ी इसको रिवाइज कर लीजिएगा, इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा. और बेटा चूँकि इस वक्त एक ऐसी सूरत हाल से हम दो चार हैं कि एक आलमी सतह पर एक वबा जो है उसके ज़ेर असर हैं, और इन हंगामी हालात से निपटने के लिए जो SOPs हैं, जो हदायत हमें बार बार दी जा रही हैं, उन पर अमल करना बेटा बहरहाल बहुत ज़रूरी है. अपना ढेर सारा ख्याल रखें, अपने साथ वाबस्ता सब लोगों का ढेर सारा ख्याल रखें, और अपना टाइम जो है वह भरपूर तरीके से जो है अपनी स्टडीज़ के लिए भी डिवोट करें. और सबसे बढ़कर ये कि अल्लाह ताला जो है अल्लाह की इबादत करें, अल्लाह ताला को याद करें, और अल्लाह ताला का फ़ज़ल और करम मांगें कि अल्लाह ताला हम सब पे रहमत करे, और ये जो हंगामी सूरत हाल है, नागहानी आफत जो हमें दरपेश है, उससे हम निकल सकें. थैंक यू वेरी मच बेटे. अल्लाह हाफिज़.